So in today's session we will discuss about thermodynamics. देखो थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करने जैसा तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी लॉज है, वो हम देखेंगे। और एक दो क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में आस्क होते करते इंटरव्यूअर। ठीक है, सो विल मूव ahead with gas laws. So what are the gas laws? Anyone have any idea? So just go ahead. Boyle's law, Charles' law, Okay. Avogadro's law, Gay-Lussac's law, and Okay. ideal gas law. Yeah, Avogadro's law is gas law. Hello. Yes, it is gas law. Okay, so can we explain that? Volume is directly proportional to a number of moles. When number of moles increases, volume also increases. Okay. And what about the Boyle's law and Charles' law? Volume is inversely proportional to pressure. When pressure increases, volume decreases. When volume increases, pressure decreases. And Charles' law, volume is directly proportional to temperature. When temperature increases, volume increases. When temperature decreases, volume decreases. So it's not at a constant temperature. At constant pressure, volume is directly proportional to temperature. Okay. Okay. And Gay-Lussac's law? Gay-Lussac's law, pressure is directly proportional to temperature. This is also pressure increases, temperature also increases. Pressure decreases, temperature also decreases. Example of RAC, in that compressor, pressure increases, temperature also increases. Also the best example is our pressure cooker. Okay. So what is the zeroth law? When two bodies thermally equilibrium with third body is they are thermally equilibrium means with the third body it is thermally equilibrium. That is Zeroth law. Kiran, That can I means try? Can I try? yes. Zeroth law of thermodynamics states that if body A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A and C are in thermal equilibrium with each other. An example could be a thermometer in a beaker where the beaker, water in the beaker acts as the body A, then the surface of the thermometer acts as body B, and C is the mercury in the thermometer. So A is in equilibrium with the surface of the thermometer. Likewise, the surface of the thermometer and the mercury are in thermal equilibrium with each other. So the water as well as the mercury come in contact with each other. So A and C are in thermal equilibrium with each other. Anyone? देखो, बोलते जाओ रे थोड़ा। एक दो जन ही बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप क्या इधर सुनने आए हो क्या? आप तो वैसे तो यूट्यूब पे ही सुन सकते हो ना। तो टेक पार्ट इन डिस्कशन। कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगी थोड़ी, बोलने का भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपको इंग्लिश नहीं आया तो हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी नहीं आया तो इंग्लिश में बोल सकते हो, पर बोलो, कुछ तो बोलो, रीजनल लैंग्वेज में तो बोलो। ठीक है। So okay, so we'll move ahead with the internal energy. What is the internal energy? Heat is applied to a body minus work done. Come again?
Heat supplied to a body minus work done by the body, Q minus W. What is the concept behind the internal energy? It is the energy contained within the molecules when the molecules are in random fashion. Okay. So basically, देखो, it's a sum of the pressure energy and kinetic energy. So pressure energy because of that position of the molecules inside the system, and the kinetic energy because of that motion of the molecules. Okay, so that means the internal energy. So basically, it is sum of pressure energy because of its potential, uh, because of its potential, at height. Suppose there is any molecule, so we have to drop at downside. So that is the energy. And second one is it has the some movement between the molecules. That means the molecule contains also the kinetic energy. Basically, it is the sum of kinetic energy because of the motion of the molecules, and pressure energy because of the position of the molecule. Okay, ठीक है. Yes, yes. चलो आगे. First law of thermodynamics. अरे बोलो रे, बोलो. Energy is neither Yes, be yes, created yes, yes, yes. energy is neither be created nor be destroyed. It is a conservation of energy. Okay. Any example? Example, Maybe it's about like conservation of energy. The energy remains the same in a system. एग्जाम्पल बता सकते हो डेली लाइफ में यूज होने वाला, कोई होने IC वाला. engine, ओके, heat energy is converted into mechanical energy. ओके. देखो, इस यूनिवर्स में जो भी होता है फर्स्ट लॉ की वजह से होता है. जैसे हम इंसानों का शरीर, हम फूड खाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी जाती है, हम वर्क करते हैं, और वर्क कुछ लिफ्टिंग में करते हैं, किसी में कुछ वर्क करते हैं. तो जो भी इस यूनिवर्स में होता है वो फर्स्ट लॉ के हिसाब से ही चलता है. ठीक है, मैंने फटाका जलाया, फूटा, उसको अंदर से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, पहले केमिकल एनर्जी थी, फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. सो व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम. In isolated system, heat cannot flow outside or heat cannot get inside the system. Okay. In And open isolated system, anyone? in isolated system, there is no surrounding, so there will be no energy transfer and mass transfer. Okay. In case of open system, there will be both energy transfer and mass transfer. In place of closed system, there will be only energy transfer and there will be no mass transfer. Any example? Hello, Hot tea in a bottle. come again. Hot coffee in a bottle. Okay, thermos. Okay, what about the open system? There will be both mass transfer and heat transfer. Okay, and what is the example? A open cup coffee. Okay. In Most open example. in open Hmm? system, the mass of Hmm? flow, all the properties will change. In closed system, at the exit, all the properties remains constant. Okay. And there is no example. Example?
Uh, in closed cycle, Carnot cycle, ideal Carnot cycle. In open cycle, generally gas turbine, air compressor. Okay. So the example of the open systems are gas turbine, air compressor, and closed system examples are like piston and cylinder and thermal power plant. Okay. Because heat transfer by the boiler and work done by the turbine or compressor. Various gas processes explain like isochoric, isobaric, isothermal, क्या है adiabatic. Anyone? in isobaric process, pressure will remains constant. In देखो मैं अब आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, मतलब मैंने कैसे पढ़ा था, कभी कंफ्यूजन नहीं हो, क्या कोई आंसर लगाते हुए, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो किधर कंफ्यूज होता है, कैसे याद रखेंगे, थोड़ा मेरा टिप्स है, किसी को पता होगा तो लो, नहीं तो अच्छा है। देखो प्रेशर का यूनिट कैसे क्या होता है, बार, ठीक है। आइसोबारिक मींस बार मींस प्रेशर कांस्टेंट, ओके। आइसोथर्मल, थर्मल मींस क्या, टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अपने पास फॉर्मूला है पीवी बाय टी इज इक्वल टू सी, जो कांस्टेंट है उसको निकाल दो और जो जाता है उधर ले मतलब पी डायरेक्ट टू वी, ओके, ऐसा कुछ। और जो बचा हुआ कोर मींस आइसो को जो बचा हुआ है वो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी, ओके। सो एक ही फॉर्मूला याद में रखने का, पीवी बाय टी, जिसमें जो कांस्टेंट है वो रखने का, और सिर्फ वो टर्म इधर की इधर ले जाने की, देखने की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। सो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, क्वेश्चन आए केस पूछा है इंटरव्यू में, एडियाबैटिक, ठीक है। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, तो Idea, जस्ट मूव अहेड। in adiabatic process, there will be no heat transfer. in adiabatic process, there is a no friction or there is a no heat loss. It is a fast And process. and work done is directly proportional to internal energy. एनीवन? And what is the isentropic process? Isentropic process, entropy remains constant. What is the polytropic? Hello? Don't know, but I got a formula PV raised to n is equal to constant. When compression and expansion takes place according to the law of PV raised to n is equals to C, then this See, process is called as the polytropic yes, process. yes, yes. Okay. Okay. So what is the cyclic process? Initial and final process, initial and final state system is coincide. Any example? Hello? Auto cycle.
Okay, so we'll move at like the second law of thermodynamics. So basically, second law is divided into two statement, like Kelvin-Planck statement and Clausius statement. So if anyone have any idea about like Kelvin-Planck statement, so just move ahead. It is impossible to make a 100% efficient engine. Kelvin flex status, and in Clausius status, it is impossible to reach low temperature to high temperature without any work done. जस्ट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि अगर हमने इनपुट 100% दिया तो हमारा आउटपुट कभी भी 100% नहीं होगा, 100% से थोड़ा कम ही होगा। ठीक है, ये बताता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बताता है कि हीट नेवर ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द हायर टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ओके 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 ओके, देखो थर्मोडायनामिक्स में ऐसा डिस्कस करने जैसा कोई नहीं। थर्मोडायनामिक्स के मेनली जो भी क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज रहते हैं, जो भी ऐसे मतलब क्या इसमें किस पे वर्क करता है, क्या होता है, ये मोस्टली क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछेंगे लाइक थ्योरी में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि ऑनलाइन होती है मोस्टली। ठीक है, तो उसमें आपको पूछेंगे, तो आपको एक बार मतलब प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, इस क्वेश्चंस की कैसे लगा है। मोस्टली मैंने तो देखा है कि जितने भी टेस्टिमोनीज है, जितने भी कोई से भी, तो ज्यादा वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें, सिर्फ एक दो का एंट्रोपी और एंथैल्पी पूछी है, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है वो पूछी होती है। बस मुझे तो इतने क्वेश्चन याद है इसके। ठीक है, बट वील मूव अहेड, देखते हैं क्या होता है, किसको कुछ आता है। ठीक है, एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये। ठीक है, डिस्कशन से क्या डिस्कस क्या करेंगे हम, ये तो लॉ है, वैसे ही तो वैसे ही होगे ना। ना इसमें कुछ वर्किंग है पम्प जैसी, ना इंजन जैसी कुछ, कि हम उस पर क्रॉस क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड से अपने को इसमें याद रखना ही होगा। ठीक है, so what is the extensive property and intensive property? देखो 12th स्टैंडर्ड का है सब। हेलो, Intensive property is a property which is independent of mass, whereas extensive property is a property which is dependent on mass. Example of an intensive could be a temperature and pressure, whereas extensive property could be volume, mass, etc. करेक्ट 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 करेक्ट। so okay, move it like enthalpy. So what is the enthalpy? Enthalpy is equal to uh, internal energy plus work done of a system. Enthalpy means total heat contained inside a system. Okay, so what is the entropy? It is a Amount of randomness of molecule which will increase with the increase with the temperature will increase, and also entropy is also increase. Okay, anyone? degree Ashok? of disorder degree of disorder in molecule. Okay, देखो, in layman language, what you understand from entropy? Entropy means it is a property which increases with the addition of it and decreases with reduction of it. Just say it simple. Okay, that means entropy increases small when heat is added at higher temperature, and entropy increases greater when heat is added at low temperature.
Okay. Can you repeat it again? Okay, so basically entropy means the property of working systems which increases with the addition of it and decreases with reduction of it or removal of it. Okay, I understand. Okay, okay. Okay, so what is that temperature and absolute temperature? So firstly tell me what is the temperature? Then we'll move ahead with the absolute temperature. Amount of heat present in the surrounding. Anyone? It is a degree which represent a amount of heat. Okay. And what is SI unit? Celsius SI unit or of Kelvin. temperature. Celsius or Kelvin. Mostly Kelvin. Okay, Okay. okay. And what is that absolute temperature? Don't know. Anyone? बोलो रे बोलो कुछ जिसको पता है तो यस तो बोलो नो तो बोलो माइक तो ऑन करो Don't, कुछ. don't know, bro. Okay. So the basically absolute temperature means the temperature at which molecules of a substance does not move, called as the absolute temperature or absolute zero temperature. Okay. Can you please So repeat? basically, Hello. Can you please repeat? okay, yes. So the absolute temperature means the temperature at which molecules of substance does not move, called as absolute temperature. And like means any gas doesn't go below that absolute temperature for gases. Example of ice. Make again. What? Ice. Which ice? Ice cube that Okay. unable to move And molecules. okay. And what is that reading of absolute temperature? You have any idea? Minus 273.15 something. Correct. And in Fahrenheit? In Fahrenheit, Z- it's -460 something. तो देखो वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं एक एक मार्क के लिए रिटर्न में. तो ये थोड़ा नोट डाउन करते जाओ, किधर तो भी लिखते जाओ और रोज जब भी एंट्रेंस से आप देखते जाओ. ठीक है. तो मोस्टली थर्मो का ज्यादा से ज्यादा पार्ट तो एंट्रेंस एग्जाम में आता है. ठीक है. इंटर में एक या सिर्फ दो क्वेश्चन होते हैं वो भी हार्डली. ठीक है. सो मतलब पढ़ाई आप अब फोकस से करो. सब करते बैठोगे थर्मो का मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा ये भी करूंगा वो भी करूंगा तो नहीं जमेगा ऐसा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है. टाइम तो किसी के पास रहता है पर किसी के पास टाइम कम रहता है. ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट है उस पे पहले फोकस करो. अगर आपको इच्छा हुई बाद में करने की तो बात का सब करो. ठीक है. सो कोई से भी प्रिपरेशन के लिए पहले थोड़ा प्लान करो. देखो लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं, आगे वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है. क्योंकि देखो अगर तुम सब कुछ पढ़ने जाओगे अपने हिसाब से तो टाइम तो लगेगा. इसके लिए क्या करते जाओ कि आजू बाजू के जो भी लोग हैं उनके एक्सपीरियंस सीखते जाओ थोड़ा. ठीक है. समझ में भी अच्छा आएगा, टाइम भी कम लगेगा और वो लाइफ लॉन्ग साथ में रहेगा. सो इसके लिए डिस्कशन करो कोई सा भी एक फ्रेंड पकड़ो रोज उससे डिस्कस करते जाओ. मैंने आज ये किया, तूने आज ये किया, तो हम कल क्या करेंगे. ठीक है. जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो, तो मैं कुछ जन देख रहा हूँ ना ही माइक ऑन कर रहे ना ही कुछ कर रहे. ठीक है. सो व्हाट इज द परपेचुअल मोशन मशीन कंसेप्ट. हेलो. don't know, bro. Don't.
एनीवन? देखो ये कंसेप्ट तो नहीं है इसमें भी, बट किसी को पता होगा तो बोलो। Perpetual motion machine, I think it is an device which runs without any input, ओके and एंड it is an imaginary device, I think so. ओके, And it is not दैट possible मीन्स by it violates the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, सो we will talk about that air standard cycle, Carnot cycle, Otto cycle. So firstly मुझे इसके पहले जाने के बदले तो मुझे इसके सिमिलर नेम बताओ, ठीक है? ऑटो साइकिल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, ठीक है? तो ऑटो साइकिल के और क्या नाम है? ऑटो साइकिल Scroll cycle. और Constant volume cycle. Volume cycle. ओके, डीजल साइकिल, Constant pressure cycle. करेक्ट। ड्यूल साइकिल, Don't know. एनीवन? Combination of Otto cycle and diesel cycle. व्हाट आर द नेम्स, डिफरेंट नेम्स? क्योंकि ये क्वेश्चन रिटर्न में आता है, मुझे तो आया था, देखो ये क्वेश्चन, इसके लिए मैंने लिख के रखा था। तो देखो ड्यूल साइकिल के बहुत चार एक नाम है, ठीक है? तो मिक्स साइकिल पहला नाम, दूसरा ट्रिंकलर साइकिल, दूसरा सेगल साइकिल, एंड फोर्थ वन इज सैबेथ साइकिल। इस थोड़ा सर्च कर लो ये नाम, एक बार मिल जाएंगे आपको नेट पे, नहीं तो इस सेशन जब भी रिकॉर्ड होगा आप देख सकते हो, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट द ब्रेटन साइकिल? ब्रेटन साइकिल को क्या कहते हैं, कुछ पता है? सेकेंडरी नाम क्या है ब्रेटन साइकिल का? हेलो? Don't know about that. जूल Don't know. साइकिल, I जूल think साइकिल Brayton ब्रेटन साइकिल को cycle भी बोलते is used in aeroplane engine. हैं, यस, ठीक है। एंड देखो ब्रेटन साइकिल का तो बता दिया, पर अपना ड्यूल साइकिल है, ड्यूल साइकिल, ड्यूल साइकिल कहाँ यूज होती है, किसी को पता है? वेयर द ड्यूल साइकिल यूज? In modern ship. करेक्ट 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 करेक्ट। देखो आज का तो सेशन इतना ही था थर्मो के, थर्मो के क्वेश्चंस मेनली तो एक तो एंट्रोपी पूछते हैं, नहीं तो एंथैल्पी पूछते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, एक बार देख लो, उसकी रीडिंग करके जाओ, मतलब बता दो सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सो किन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, इंटरव्यू के लिए बताता हूँ। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसके बाद एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, सिर्फ चार क्वेश्चन इंटरव्यू के, ठीक है? और लॉ, सॉरी, और लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है? Okay. सिर्फ इतने क्वेश्चंस। और जो भी ऐसे मतलब सिमिलर नाम है मैंने जो भी आपको बताया, वो पीवी बाय टी क्या होता है, वो क्वेश्चन सब आप करोगे किसमें? थ्योरी में, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें, ठीक है? सो थोड़ा देखते जाओ, पढ़ते जाओ थोड़ा, अगर नहीं हुआ कुछ तो ग्रुप पे डाल सकते हो, किसी को नहीं कुछ समझना है कोई कॉन्सेप्ट, अगर मिल मिल देगा तो कोई भी वीडियो डाल देगा, नहीं तो अपना टाइप वाइप करके डाल देगा। बट प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नहीं की है तो जो भी कैंडिडेट नहीं बोल रहे मीटिंग में आके, उनके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ, टाइम बाद में नहीं आएगा। जितना जल्दी हो सके कोई सी भी कंपनी की स्पॉन्सरशिप पकड़ लो और चले जाओ, ठीक है? कितने दिन वो करते बैठोगे सब, ठीक है? Okay. तो टुडे सेशन, तो देखो, so we will winding up today's session over here. Anyone have any doubt? न्यूमेरिकल्स भी करो थोड़े, हो गए तो वर्क डन के, ठीक है?